Hey everyone, hi, hello, this is me, Sonia. Welcome to my channel, Lavanya Bhatt. So, you can see what I am wearing today. This is white bodycon dress, one piece dress. You can also say it. This is the first time I have made such kind of dress, such fitted dress, such like one piece dress, and this is the even first time I'm wearing such kind of dress, and I am totally loving my this look. I have never thought that I can look so good in western attire also, since before I've just wore or I have just carried ethnic wears, umbrella, frocks, lehengas, palazzo, suit. That's the only thing I was wearing, and I was stitching, I was designing. But today I have made this dress, and to be honest, I didn't meant to make this dress. गलती से बना दिया, फैब्रिक के वेस्ट होने की वजह से आई हैव मेड दिस ड्रेस, एंड नाउ आई एम सो थैंकफुल दैट आई डिड सो, वरना मुझे कभी नहीं पता चलता दैट आई कैन ऑल्सो लुक दिस गुड इन सच काइंड ऑफ ड्रेसेस. लाइक आई एम टोटली लविंग द फिट, आई एम टोटली लविंग द डिजाइन, आई एम टोटली लविंग द fabric. So before heading to the making process of this dress, let me tell you the story behind the making of this dress. मैंने मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ये ड्रेस बनाने का एंड इसे वेयर करने का. गलती से ये बन गया. ओके, एंड गलती क्या थी दैट आई गॉट दिस ऑर्गेन्जा फैब्रिक फॉर एन एक्सपेरिमेंट. कौन सी एक्सपेरिमेंट के लिए? आई वांटेड टू कलर इट. ठीक है, कलर करना चाहती थी और मैं देखना चाहती थी क्या ये ऐसा टर्न आउट होता है जैसे मैंने इंस्टाग्राम की रील में मैं देख रही थी. आजकल काफ़ी ज़्यादा ना ऑर्गेन्जा की फैब्रिक को कलर किया जा रहा था और जो उसका साड़ी मतलब साड़ी बनाई जा रही थी कलर करके, एंड दैट वाज लिटरली सो अमेजिंग टू सी. मुझे लगा मैं भी कर लूँगी, सो आई गॉट दिस ऑर्गेन्जा वाइट कलर फैब्रिक. दिस इज डाइबल ऑल्सो, बट मेरा तो प्लानिंग कुछ और था. सो फैब्रिक्रिल के कलर से आई कलर्ड इट, बट दैट फेल्ड. ओके, नहीं अच्छा लगा जैसा मुझे चाहिए था, जैसा मैंने लोग देखा था इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह में. आई डेंट गेट सच काइंड ऑफ टेक्सचर एंड आई डेंट गेट सच काइंड ऑफ लुक ऑफ दैट फैब्रिक. ओके, सो आधा फैब्रिक वेस्ट हो चुका था और मुझे काफ़ी डर लग गया अगर पूरा फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा तो माय मनी इज गोना बी. सो आई फटाफट मैंने अपना अलमीरा चेक किया. आई गॉट लाइनिंग ऑफ लिनन फैब्रिक एंड कॉटन. हाँ, कॉटन. सो अंडर दिस ऑर्गेन्जा फैब्रिक आई हैव यूज्ड लाइनिंग ऑफ लिनन फैब्रिक एंड कॉटन फैब्रिक. और उसके बाद फिर फटाफट से स्कर्ट का पैटर्न काटा, थोड़ा स्कर्ट का पैटर्न काटा एंड देन मेड दिस टॉप. फर्स्ट डिटेलिंग के लिए, थोड़ा सेक्सी सा वाइब देने के लिए, सेक्सी सा लुक देने के लिए आई हैव मेड दिस cut. Okay, and detail it with the pearls. Okay, so and it's literally gonna so amazing. You can see, just see little मतलब बहुत अच्छा लग रहा था. फैब्रिक ज़्यादा नहीं था, so I couldn't make any other kind of sleeve, so I have just made this ruffles and stitched it. Okay. If I talk about the mistakes I have done while making this dress is, first of all, I didn't use padding in this dress. Okay, जल्दी के चक्कर में I couldn't think of the padding that I should have put padding in this dress before detailing such kind of design in it. और लुक इन इट, बिकॉज उस अंदर जो मैंने पहना है उसके बार बार नीचे आने का और उसको दिखने का मतलब जो एक डर है वो है मेरे अंदर. तो अगर मैं वो पुट करती, पैडिंग इसमें डालती, पैडिंग स्टिच करती, so this dress could do little better. Second mistake I have done in this dress is the
zip. I couldn't stitch it wisely. I couldn't stitch it cleanly. इस पे ना थोड़ा सा लूप आ रहा है, थोड़ा सा होल दिख रहा है, एंड बहुत ही टाइटली मुझे इससे क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है. आई टुक हेल्प ऑफ माई सिस्टर in pulling it. So this is the second mistake I have done in making of this dress, and that's it. I think this dress is perfect, but ये जो दो mistake है, अगर नहीं होती तो this dress could be 10 out of 10. Don't you think so? I hope you loved this video and the making process of this dress and the story behind it. And according to me, fashion designing is all about experimenting. तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कुछ सीख पाएंगे. एंड माई दिस होल टैलेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. जितना मैंने किया, जितना मैंने मतलब खराब किया, वेस्ट किया, उन्हीं सब से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जितने जो भी मेकिंग प्रोसेस है इस ड्रेस का, आई होप कि आप भी ऐसी नई नई चीज़ें ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट फेल होने पर मेरी तरह घबराई नहीं, डरी नहीं. बट डरना भी कभी कभी ठीक है यार. आई मेड दिस ड्रेस एंड आई एम वेयरिंग इट एंड आई एम लविंग इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरी गलतियों से सीखिए एंड डोंट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. ओके, बाय.